Yes, sir. Any question from the last lecture? No, sir. Okay. So we basically started the discussion on the synthesis of ammonia gas, and this is the flow sheet which is used for the manufacturing of ammonia gas, and it is known as Kellogg's process. So in this process, we basically take a hydrocarbon, we reform it. As a result of reforming of a hydrocarbon, we will have hydrogen, and then from air we will take nitrogen. Um, Nitrogen and hydrogen both are the required reactants for ammonia synthesis. So this process basically utilizes a hydrocarbon and air. So through this line, a hydrocarbon, it can be naphtha, natural gas, or any other hydrocarbon, whatever is available in that country. In Pakistan, natural gas is abundantly available, which is used in ammonia synthesis. So firstly, the hydrocarbon is passed through a desulphurizer, where we have to remove the sulfur uh, from the or sulfur containing compound from the hydrocarbon. It is done in the desulphurizer unit. Why we want to remove sulfur? Because if the sulfur can damage the ammonia synthesis catalyst, the catalyst which is used for the synthesis of ammonia in ammonia converter. So in order to avoid its damage, we basically pass the hydrocarbon through a desulfurization unit. So in desulfurization unit, the removal of sulfur takes place in two steps. First step is the hydrogenation, which takes place at 350 to 400 degrees C. And the hydrogenation of hydrocarbon results in the formation of hydrogen sulfide gas. Then in the next step, which is adsorption, this hydrogen sulfide gas is adsorbed on zinc oxide bed, and zinc oxide bed as a result is converted into zinc sulfide, while we'll have water. So by following hydrogenation and adsorption, we are able to remove sulfur or sulfur containing compounds present in the hydrocarbon. The hydrogenation steps take place at 350 to 400 degrees C, and it requires the catalyst of cobalt molybdenum. And as a result, the sulfur content in hydrocarbon, it is reduced to zero point 0.1 ppm or less than zero point 0.1 ppm. Initially, it can be up to 5 milligrams per normal cubic meter. So the desulfurized hydrocarbon is then introduced in the primary reformer, and the other reactant is the steam. So from this line, this is the steam drum. So from this line, steam goes into the primary reformer, and from this bottom line for steam, the hydrocarbon goes into the primary reformer. So in primary reformer, we require the temperature of 500 to 600 degrees C. In this reformer, we have vertical tubes. Those tubes are made of nickel chromium alloy, and these tubes are filled with nickel reforming catalyst. So at this temperature and in presence of this catalyst, methane or hydrocarbon reacts with steam to form carbon monoxide and hydrogen gas. Then carbon monoxide can also react with steam to form carbon dioxide and hydrogen gas. So these are the two main reactions which take place in the primary reformer. The reactions are hydroexothermic, and if we do not remove this exothermic heat, it will cause the meltdown of the reactor. So it is very important to remove the heat from the primary reformer.
So from this line, steam goes into the reformer, and from this line, the hydrocarbon, then both are mixed and sent into the tubes which contains the nickel reforming catalyst at the required temperature, and in presence of the catalyst, hydrocarbon with the help of steam is reformed into carbon monoxide, carbon dioxide, and hydrogen gas. So the stream leaving the reformer will have reforming products plus some unreacted methane and steam. As the reaction is highly exothermic and we have to remove this exothermic heat, otherwise it will cause the meltdown of the reactor. So in order to do so, we introduce water from steam drum into the other section of the primary reformer. This water absorbs the heat of the reaction and then leaves the primary reformer as steam, which is then collected in the steam drum. Then we can use this steam as a reactant from the from primary reformer, or we can use this steam anywhere else on the plant. Okay. Then the stream leaving the primary reformer enters into the secondary reformer, where we also introduced air. So up to 85% natural gas is converted or is reformed in primary reformer, and this limitation is because of the chemical equilibrium. The remaining 15% methane is converted in the secondary reformer. And in secondary reformer, we basically introduced air, which reacts with the available hydrogen, some amount of the hydrogen which was formed in primary reformer. As a result, the oxidation of hydrogen will take place. We will have nitrogen and water or steam, and this reaction will is also highly exothermic. So this heat which is generated as a result of this reaction, this heat will be consumed by the remaining unreacted methane, and after getting the heat, the methane will follow these reactions, and we will have CO, H2 and CO2, more CO, H2 and CO2 at the end of the secondary reformer equilibrium. So through this line, air goes into the secondary reformer. From this line, this is the primary reformer product stream. This air will oxidize hydrogen, some amount of hydrogen present in this product stream, and as a result, heat will be liberated. That heat will be consumed by the unreacted methane present in this stream, and it will be converted into carbon monoxide, carbon dioxide, and hydrogen. Then this product stream leaves the secondary reformer. Firstly, we pass it through a heat recovery section and we transfer its heat into water, which is then converted into steam. And we will lower the temperature of this product stream to a point, to a temperature which is required in the next step, which is the carbon monoxide shift conversion. ठीक है? So इन दो रिफॉर्मेट से कंसर्न कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क. Yes. सर हमारे पास जो सेकेंडरी फॉर्मर के अंदर हीट जनरेट होगी वो प्राइमरी फॉर्मर से कम ही होगी ना या उससे भी ज्यादा होगी? Actually, it depends upon the amount of hydrogen consumed in the reaction. Generally speaking, hydrogen oxidation is highly exothermic. ठीक है, तो उसमें भी अमाउंट काफी जनरेट होगी, बट वो इतनी ही होगी, उसकी रिक्वायरमेंट इतनी ही होगी कि यहाँ पे जो 15% अनरिएक्टेड रह गई है वो उसको कंज्यूम करे और यूजफुल प्रोडक्ट बना दे. इसके अलावा इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं. तो हम स्ट्राइकोमेट्रिकली हाइड्रोजन इतनी ही कंबस्ट करेंगे जितनी अनरिएक्टेड मीथेन को कन्वर्ट कर सकती हो. सही सर, थैंक यू.
जी कोई और क्वेश्चन? सर जी सर हम इनको रिफॉर्मर का नाम क्यों दे रहे हैं? ये है तो वैसे नॉर्मल रिएक्टर्स ही, इसमें कोई रिएक्शन ही हो रहा है, बट अमोनिया चूंकि इसमें हम एक हाइड्रोकार्बन की शक्ल बदल रहे हैं, तो इसलिए शायद उन्होंने इसको रिफॉर्मर कह दिया, रिफॉर्म कर। जी कोई और क्वेश्चन? नो सर। Okay, ji. The next step is the shift conversion, and in shift conversion, the temperature, the process that is the conversion of CO into CO2. It takes place in two steps, right? So first of all, why we want to convert CO into CO2? Because generally it is easier to separate CO2 from the product stream than CO. जनरली जो CO2 रिमूवल होती है, या द मेथड्स आर रेडिली एंड चीपली अवेलेबल फॉर द रिमूवल ऑफ CO2 देन CO। तो उसकी रिमूवल आसान है क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसलिए वी ट्राई टू कन्वर्ट CO इनटू CO2। और CO और CO2 को क्यों रिमूव करना है? बिकॉज दे कैन डैमेज दी अगेन दी कैटलिस्ट कमिंग इन दी अमोनिया सिंथेसिस रिएक्टर। तो इसलिए सी और CO2 को भी रिमूव करना जरूरी है। So this product stream basically enters into the CO shift converter. As you can see, it has two parts. ठीक है, as shown by this line. The upper part and this one is the lower part. The upper part is termed as high temperature shift conversion, yeah, shift converter, and the lower part is termed as low temperature shift converter. ठीक है, सो CO कन्वर्जन है इनटू CO2 वो दो स्टेप्स में होगी, और पहला स्टेप जो है वो हाई टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर है, जो दूसरा स्टेप है वो लो टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर। ठीक है, the requirement of high temperature shift converter is 400 degrees C in terms of temperature. So that means the stream coming from the secondary reformer will be cooled down by this exchanger up to 400 degrees C, and then this stream will enter into the high temperature shift converter. So this is the reaction which takes place. Usually the gas which is coming from secondary reformer, it contains 12 to 15% CO. Okay? So this is the reaction which takes place, that CO is reacted with steam. It is converted into CO2 and H2. Now this reaction takes place in two steps: high temperature shift conversion step, and low temperature shift conversion step. This one, low temperature shift conversion. So in high temperature shift converter, the temperature required is 400 degrees C. Catalyst required for this reaction at 400 degrees C is iron oxide chromium oxide catalyst. So in presence of this catalyst and at this temperature, CO is converted into CO2, and approximately 3% CO is still present after HTS, high temperature heat conversion. Means the stream which will enter into the low temperature shift converter will have 3% CO, because major amount of CO has been converted into CO2 by high temperature shift converter. The steam entering into low temperature shift section now has 3% CO. It enters into LTS, low temperature shift converter. The temperature required here is 200 to 220 degrees C, and at this temperature, for this reaction, the catalyst required is zinc oxide based catalyst. In presence of this catalyst at this temperature, this reaction will take place. CO will be converted into CO2,
and that 3% content is further reduced to 0.2 to 0.4%. Okay? So that is how in two steps we will be able to reduce CO percentage in the product gas from 12 to 15% to 0.2 to 0.4%. And this is the basically main job of the shift conversion. So this is the HTS, which will reduce the CO content up to 3%. Then we will take out this product stream from HTS through this line, and we will pass it through an heat exchanger. We will cool it, and then we will reintroduce it into the lower section, which is the low temperature shift converter. Why we are cooling it? Because the temperature required in LTS is 200 degrees C, while temperature in HTS is 400 degrees C. That is why we pass this stream through a heat exchanger to reduce the temperature up to 200 degrees C, which is the requirement of LTS. So any question regarding shift conversion regarding this equipment? सर हम ये दो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर हम LTS खाली यूज करें तो वो सारी की सारी CO को 0.2% पे कन्वर्ट नहीं कर सकता? ओके, तो जैसा कि मैंने कहा कि यही रिएक्शन HTS में होना है और यही रिएक्शन LTS में होना है, ठीक। मगर HTS में यही रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होगा और इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगा। LTS में सेम रिएक्शन लो टेम्परेचर पे होगा और इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। जो पॉइंट यहाँ पे समझने की है जरूरत वो ये है कि एक ही रिएक्शन दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे कैसे हो सकता है? वो हो सकता है इस कैटलिस्ट चॉइस की वजह से। कैटलिस्ट बेसिकली रिएक्शन के एक्टिविटी को रिड्यूस करता है और लो टेम्परेचर पे सेम रिएक्शन परफॉर्म करवा देता है। हो सकता है हम ये रिएक्शन इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट परफॉर्म कर सकते हो, मगर टेम्परेचर रिक्वायरमेंट शायद 1000 डिग्री सी हो या उससे भी ज्यादा हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो जब हम कैटलिस्ट ले आते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है, तो लो टेम्परेचर पे भी रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं। अब जो कैटलिस्ट जितने लोअर टेम्परेचर पे सेम रिएक्शन परफॉर्म करवाता है वो उतना ही कॉस्टली होता है, और जो कैटलिस्ट सेम रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे करवाता है वो उतना ही चीप होता है। तो इसलिए यहाँ पे ना दो कॉम्बिनेशन यूज होते हैं। कुछ काम हम सस्ते कैटलिस्ट है और जो रिमेनिंग काम है वो हम महंगे वाले कैटलिस्ट से ओवरऑल इस तरह से मैनेज करते हैं कि जो जो कॉस्ट है या जो इकोनॉमिक्स है वो मैनेज्ड रहे, और जितनी मेरी प्रोसेसिंग कॉस्ट कम होगी, जितना मेरा कैपिटल कम होगा, उतना ही मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। इन एट द सेम टाइम इन्हीं इन्हीं स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए कि सीओ इतनी रिड्यूस होनी चाहिए। सो अगर हम हाई टेम्परेचर वाला कैटलिस्ट सिर्फ यूज करें, यानी कि सिर्फ HTS हो, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट प्रोसेस की ज़्यादा होगी। अगर हम सिर्फ LTS वाला यूज करें, एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है मगर कैटलिस्ट की कॉस्ट ज़्यादा होगी। इसलिए हम एक कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन लेकर आते हैं, थोड़ा सा उधर से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, थोड़ा सा यानी कि थोड़ा सा एनर्जी पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, थोड़ा सा कैटलिस्ट पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और ओवरऑल दोनों चीज़ों को सिनेरियोस को इस तरह से मैनेज करते हैं कि टारगेट भी अचीव हो और प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा। क्लियर है जी? सर yes, thank you. सर ये जो परसेंटेज के बाद जो ड्राई गैस बेस लिखा हुआ है सर, ये क्या चीज़ है? आई मीन तो नहीं इसको बड़ी एक्सप्लेन। साइकोमेट्री ड्राई बेसिस पे गैस का एनालिसिस किया नहीं, यस सर, यस सर, यस सर। ये वही बेस है ठीक है। जी। और कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस सेक्शन शिफ्ट कन्वर्जन? ओके जी, फिर देन मूविंग फॉरवर्ड,
the product stream coming from the LTS, this stream. Firstly goes through a heat recovery heat exchanger where we drops its temperature, and then a further reduction with the help of this utility exchanger, and then the stream enters into a water separator. And because if you see all the reaction, okay, we already have provided steam in primary and secondary reformer. All right. There is also water formation in the desulphurization section. So this water, the excessive steam, the secondary reforming reaction, and the water produced in H2O, sorry, in shift converter. So we have a huge amount of water, and we have to separate it out because it is not performing, it is not doing anything in the process, but its presence is increasing the size of the equipment because it will occupy a space. So firstly, we have to remove this excessive steam or water. For that purpose, from low shift converter, we first exchange the heat of the stream with a utility stream. Then we pass it through a condenser where the water vapors present in the stream is converted, only the water vapor present in the stream is converted into liquid state. So this stream entering into this separator will have two phases, liquid water and gases. So liquid water has higher density, it is denser, so it will settle down while the gases will raise up in the separator and they will move on into the next section. So the water will be separated from a product stream. So the next section is the removal of CO2, and this CO2 is removed with the help of absorption principle. So in absorption principle, we basically introduce a solvent, uh, a chemical, which will only have the affinity towards the compound which we want to remove. ठीक है? So absorption में हम हमारी स्ट्रीम का एक दूसरी स्ट्रीम से एक दूसरे केमिकल से इंटरेक्शन करवाएंगे, और उस इंटरेक्शन में बस इस चीज का ख्याल रखना है कि जो हम केमिकल ऐड कर रहे हैं जिसको हम सॉल्वेंट कहते हैं एब्जॉर्प्शन की लैंग्वेज में, वो सॉल्वेंट सिर्फ उसी कंपाउंड के लिए अफिनिटी रखे जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं, बाकी किसी भी कंपाउंड के साथ उसकी कोई अफिनिटी ना हो, कोई रिएक्शन ना हो फिजिकल और केमिकल. So the critical step in CO2, one of the critical steps in absorption is the selection of this solvent. Like we want to remove CO2 from this product stream, so we will select a solvent which will only interact with CO2 and it will not interact with the remaining components present in this product stream. Okay? So other than that, that the solvent should have the affinity towards only towards CO2. It should be cheap. It should be easily available. It should not react with other components, and its recovery should be easy, and many more things. Okay? So with respect to CO2, there are number of absorbents or solvents available which can chemically absorb CO2 or physically absorb CO2. In case of chemical absorption, there will be a reaction, and in case of physical absorption, there will be only a mixing or entrainment or entrapment. इस तरह की चीजें होंगी. So a list of chemical absorbents includes amine solution, monoethanol amine MEA, activated methyl diethanolamine AMDEA, or hot potassium carbonate solutions. And in case of physical solvents, we have glycol, dimethyl ethers, Slexol as a commercial name, propylene carbonate, and many others. So these are some common examples of the solvents, chemical and physical solvents, respectively.
So from this line, the product stream will go into the absorber, the line which contains CO2 and we want to remove it. And from the top of this section, we introduce solvent, any of the solvent which I just showed you. So the gases will raise up, the solvent being liquid will fall down, they will come in direct contact with each other. As a result, uh, this solvent will catch CO2 from the product stream and it will leave the absorber from the bottom stream. The CO2 free gas, because CO2 is absorbed by this solvent. So CO2 free gas will leave the absorber from the top and we will send it into the next section of the plant. Okay, through this line. The solvent, after absorbing CO2 from this product stream, will leave the absorber from this through this bottom stream. So this stream will have solvent plus CO2. Now we have invested some money on this solvent. We have purchased it. So we cannot waste it after one cycle. In fact, we have to reuse it. And in order to reuse it, in order to make it able again to absorb CO2 from the product stream, firstly, we have to remove CO2 which it has already absorbed. And for that thing, we send this solvent plus CO2 mixture into the stripper. Okay? This is CO2 stripper. So before sending solvent plus CO2 into the stripper, we heat this solvent in a heat exchanger. So why we are heating it? Because this solvent has CO2 in it. CO2 is a gas. So whenever gas molecules get energy, get heat, their molecular motion get faster. कि molecular motions तेज हो जाती हैं. As a result of this energy, they start leaving the system. They start leaving that liquid or mixture. So we heat uh, uh, this solvent and CO2 mixture in this heat exchanger. CO2 will start to liberate out of this mixture. Then we will send this mixture into this column. CO2 being a gas will leave from the top, while CO2 free solvent will leave the stripper from the bottom. We will cool it to the process temperature, further cool it as per the process requirement in this heat exchanger, and then we will reintroduce this recycled or refreshed solvent into the absorber. Again, this solvent will go into the absorber. It will absorb the CO2 from this product stream. We will have solvent plus carbon dioxide mixture in this stream. We will send this stream after passing it through a heat exchanger into a stripper where CO2 will leave the solvent from the bottom while reclaimed solvent will be sent back into the absorber. So this is how this whole process will work in this cycle. The CO2 leaving the stripper from the top, it may entrap some solvent molecules in it. So we will pass the CO2 firstly through a condenser. And the job of the condenser is to condense the solvent molecules entrapped in CO2 gas. It will only condense solvent molecules and not CO2. And this two-phase mixture will go into a settler, decanter कहते हैं उसको. Solvent क्योंकि liquefy हो गया होगा, it will have higher density, so we will send it back into the stripper, while CO2 will leave the system through this line. So this is how this whole cycle will work. Whenever there is an absorption column in a plant, there will always be a stripping column in the plant to reclaim the solvent. Any question regarding absorption stripping combination? सर ये स्ट्रिपिंग और एब्जॉर्प्शन का ये तो इकट्ठा साइकिल चल रहा है ना, तो सर इससे पहले हमें सॉल्वेंट इंट्रोड्यूस तो करवाना ही पड़ेगा ना? आपका आवाज बेटा कट रही थी तो क्वेश्चन पूरा सुनाई नहीं दिया. सर मैं कह रहा हूँ ये साइकिल तो चलता रहेगा एब्जॉर्बर और स्ट्रिपर का. जी चलता रहेगा.
तो उससे पहले हमें सॉल्वेंट खुद ही थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा ना एब्जॉर्बर में। एब्जॉर्बर में सॉल्वेंट प्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। सर ये जो आपने सॉल्वेंट बताया है कि CO2 को साथ एब्जॉर्ब करके नीचे आ जाता है और फिर स्ट्रिपर में जाके अलहदा होके दोबारा एब्जॉर्बर में आता है, जी 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 जी। तो मैं उसी सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ। वो सॉल्वेंट हमें पहले खुद ही देना पड़ेगा ना एब्जॉर्बर को स्टार्ट करने के लिए। जी जी, फर्स्ट टाइम तो आप ही सॉल्वेंट प्रोवाइड करेंगे ना। इनफैक्ट यहाँ पे वो लाइन शो नहीं है, आप कुछ मेकअप सॉल्वेंट भी थोड़ा सा ऐड करते रहते हैं स्टाइकोमेट्री को देखते हुए, क्योंकि ठीक है। 100% CO2 और सॉल्वेंट की सेपरेशन नहीं होती, कुछ सॉल्वेंट वेस्ट होता है इस प्रोसेस में। तो उसके बैकअप के तौर पे आप कुछ मेकअप अमाउंट सॉल्वेंट की ऐड, फ्रेश सॉल्वेंट की ऐड करते रहते ओके सर। और सर ये कार्बन डाइऑक्साइड हम एनवायरनमेंट में वेस्ट कर देते हैं। हैं। आपकी भी बेटा आवाज डिस्टॉर्ट कर रही है, क्वेश्चन इसमें। सर ये कार्बन अगर आपके किसी क्लासमेट को आपका सर ये क्वेश्चन पूछ सुनाई दे रहे हैं कि तो रिपीट करते हैं। ये भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हम इन्वायरमेंट में वेस्ट कर देते हैं। जी 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 जी, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल्दो इट इज ए पोल्यूटेंट and generally it should not be sent as as it is into the environment, क्योंकि ये pollutant है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस है। रिएक्शन जो होते हैं ना, वो खास टेम्परेचर, खास प्रेशर या खास एक्टिवेशन एनर्जी पे होते हैं। तो हर कंपोनेंट हर टेम्परेचर हर प्रेशर पे रिएक्शन नहीं दे सकता। प्रोसेस डिजाइन ही इस तरह से होता है। तो वो डिजायर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे या कैटलिस्ट की मौजूदगी में ही रिएक्शन हो, वैसे ना। जी, कोई और क्वेश्चन? Okay, moving forward, now this gas from which we separated the CO2, it goes into the next step, which is a methanator. So basically, the industry does not want to take any chance on CO and CO2. So basically, we send this product stream into methanator because we want to convert the lower amounts of CO and CO2 present into methane. Because even lower amounts of CO and CO2, they can damage the ammonia synthesis catalyst. So they do not take any kind of chance, and they convert these lower amount of CO and CO2 into methane. And methane, why into methane? Because methane has no effect, adverse effect on the ammonia synthesis catalyst. तो जो लोअर अमाउंट CO CO2 की हैं, उसको हम मेथानेटर में भेजते हैं और मीथेन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये लोअर अमाउंट्स भी जो है वो हमारे अमोनिया सिंथेसिस कैटलिस्ट को डैमेज कर सकती है। और मीथेन में इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि मीथेन का कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता, कोई डैमेजिंग इफेक्ट नहीं होता अमोनिया सिंथेसिस कैटलिस्ट। और इन केस ऑफ मेथानेशन,
We required the temperature of 300 degrees C, a nickel-based catalyst. So in the presence of this temperature and in presence of nickel-based catalyst, CO and CO2 are hydrogenated into methane and water by following this chemistry. Right. So the stream coming from the absorber, it is first heated to the reaction temperature. Then this heated stream is introduced into the methanator, where a nickel-based catalyst is present. In presence of that catalyst, hydrogen reacts with CO and CO2, and as a result, CO and CO2 are converted into methane. Now, the stream which is leaving the methanator, it will have no CO and CO2 in it. And then this stream will go uh, firstly into a heat exchanger, where we will reduce its temperature, and then it will go into the next step, which is the ammonia synthesis loop. ठीक है, फिर ये स्ट्रीम नेक्स्ट स्टेप में जाती है और नेक्स्ट स्टेप इज अबाउट द अमोनिया सिंथेसिस. सो मेथनेशन से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन? सर ये प्रोसेस फिर काइंडली रिपीट कर दें, आपकी आवाज़ काफ़ी कट रही थी. तो जो स्टीम एब्जॉर्बर से टॉप से मेथनेटर में जाती है, इस स्टेप का काम ये है कि हमने इस स्ट्रीम में जो लोअर अमाउंट सी और CO2 की रह गई हैं उनको भी रिमूव करना है, क्योंकि ये लोअर अमाउंट्स भी अमोनिया सिंथेसिस कैटलिस्ट को डैमेज कर सकते हैं. इसलिए हम सी और CO2 की इन लोअर अमाउंट्स को इस रिएक्टर में भेज के मीथेन में कन्वर्ट कर देते हैं. और मीथेन में इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि मीथेन अमोनिया सिंथेसिस कैटलिस्ट को डैमेज नहीं करता. सो इस केमिस्ट्री को फॉलो करने के लिए हमें मेथनेटर में 300 डिग्री सी टेम्परेचर चाहिए और निकल बेस्ड कैटलिस्ट चाहिए. जब हम ये प्रोसेस कंडीशंस मेंटेन करते हैं तो सी और CO2 हाइड्रोजिनेट हो जाती हैं इनटू मीथेन एंड स्टीम. ठीक है, तो हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारी स्ट्रीम में, वो हमने रिफॉर्मर में बना ली हुई है. तो ये लोअर अमाउंट्स कुछ अमाउंट हाइड्रोजन की कंज्यूम करती हैं और दे आर कन्वर्टेड इनटू दी मीथेन. ठीक है, सो दिस स्ट्रीम इज फर्स्टली पास थ्रू ए हीटर, क्योंकि टेम्परेचर रिक्वायरमेंट 300 डिग्री सी है. फिर इस टेम्परेचर पे यहाँ पे कैटलिस्ट होगा मेथनेटर में, निकल बेस्ड रिएक्शन होगा और CO2 हाइड्रोजनेट हो जाएंगी मीथेन में. अब जो प्रोडक्ट स्ट्रीम मेथनेटर के बॉटम से निकल रही है उसमें सी और CO2 नहीं होगी, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और मीथेन. और अगर एयर के अंदर कुछ और इनर्ट इम्प्योरिटीज हैं तो वो मौजूद होंगी. और फिर ये प्रोडक्ट गैसेस दे विल गो इनटू द नेक्स्ट स्टेप विच इज द अमोनिया सिंथेसिस स्टेप. ये जो पूरा लूप बना हुआ, दिस होल लूप, दिस इज द अमोनिया सिंथेसिस स्टेप. क्लियर हो गया? ये कोई और क्वेश्चन? जी, so first of all for ammonia synthesis, okay, now we are entering into the ammonia synthesis loop. All right, so the first requirement in ammonia synthesis is the high pressure. The gas which is entering in the converter, which is leaving the hold. एक मिनट क्लास होल्ड कीजिए. ओके.
जी, so first requirement in ammonia synthesis step is the high pressure. So there is a compression section in ammonia synthesis uh, section, which is represented by this compressor. Okay? So the stream which is entering into the compression section, it has a pressure of 27 kilogram per square centimeter, and it is compressed up to 151 kilogram per centimeter square. And this is the pressure which is required in the reactor. For this purpose, the modern plants have centrifugal compressor, and depending upon the capacity, we may have one compressor or we may have more than one compressor connected in series. It all depends upon the amount or handling amount of the components or the capacity of the plant. Then this pressurized gas or the reactant gas, it goes into the ammonia synthesis reactor, where the temperature is required in this range, 350 to 550 degrees C. Pressure is 100 to 250 bar at this reaction temperature, and in presence of iron catalyst. Nitrogen and hydrogen reacts and they form ammonia. Again, it is a exothermic reaction, as well as it is also a reversible reaction. Okay, so if we do not control the reaction properly, reaction conditions, the product may dissociate into its original reactants, which will load the conversion or yield of the process. So we do not want that. That is why we put a very excellent type of controllers on the ammonia synthesis reactor, and we achieve per pass conversion up to 20 to 30%. And if we try to achieve more than this conversion, then the dissociation of ammonia starts. So that is why we, you can say, compromise a little bit on the per pass conversion, and we try to uh, increase the passes of the gases through the converter so that we can have an overall higher yield and conversion. So this is basically the whole chemistry of the process, and a lot of heat exchangers are also required in this section because the reaction nature is exothermic. सर जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि कंप्रेस करना होता है प्रेशर के लिए, तो मतलब कंप्रेशन कॉजेज हीटिंग इफेक्ट, तो यहाँ पे हीट एक्सचेंजर लगाना होगा ना हमें? अगेन डिपेंड करता है अमाउंट्स कितनी है, यानी कि फ्लो कितना है गैस का, अकॉर्डिंगली एक कंप्रेसर है या एक से ज़्यादा कंप्रेसर है, और जो रिएक्शन टेम्परेचर है उससे, क्योंकि जब भी आप कंप्रेशन करेंगे यानी कि प्रेशर बढ़ाएंगे गैस का, उसका टेम्परेचर बढ़ना है, तो वो जो टेम्परेचर बढ़ना है वो रिएक्शन टेम्परेचर तक है या उससे बियॉन्ड लेके जा रहा है। अगर तो बियॉन्ड लेके जा रहा है तो फिर आपको कूलिंग सिस्टम उसी पॉइंट पे लगाना पड़ेगा, या दो कंप्रेसर के बीच में हो सकता है लगाना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर कंट्रोल में है, डिजायर्ड लेवल तक है, तो फिर इसकी नीड नहीं। ओके सर। जी, आज के लिए इतना ही। लूप जो है वो थोड़ा लेंथी है, तो वो रिमेनिंग टाइम में कवर नहीं होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ तक कोई और क्वेश्चन आपका होगा? सर एक चीज पूछनी है सर। जी सर आपने वो एक बात बता रहे थे कि उसको एक से ज्यादा इनलेट दे देते हैं ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो, जो वो दोबारा बता देंगे जरा? किस पॉइंट? सर ये आप रिएक्टर के बाद आपने बताया था कि 20 से 30% कन्वर्जन होती है, इस कन्वर्जन को बढ़ाने के लिए हम इनलेट ज्यादा कर लेते हैं। इनलेट का मतलब होता है कि पर पास, आई होप स्टाइकोमेट्री में आपने पर पास कन्वर्जन, सिंगल पास कन्वर्जन या और ओवरऑल कन्वर्जन, ये दो चीजें पढ़ी होंगी। पढ़ी नहीं है? नो सर। नहीं सर, ये नहीं अभी ये नहीं पढ़ी। ये झूठा बोल, पर पास नहीं पढ़ी सर। ये नहीं पढ़ी सर।
अच्छा, रिसाइकल नहीं पढ़ा होगा फिर, रिसाइकल स्ट्रीम्स वाला कंसेप्ट नहीं ना पढ़ा। नो सर, नहीं ये नहीं नहीं सर। पढ़ा। अच्छा, तभी फिर शायद आप लोग उसको ना पिक नहीं कर सके। असल में मसला तब रेज होता है जब हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन आते हैं। तो जिस तरह हमने सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग में भी देखा था ना, SO2 की SO3 में कन्वर्जन। तो जब रिएक्शन रिवर्सिबल आ जाए ना, तो प्रोसेस की कंडीशंस पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर कंट्रोल पुअर हो जाए तो हमें कभी भी यील्ड प्रोडक्ट की या रिएक्टेंट्स की कन्वर्जन इनटू प्रोडक्ट ये हाई नहीं मिल सकती। तो उसको कंट्रोल करने के डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं, मेथड्स हैं। जिस तरह SO3 के केस में थे तो वहां पे मैंने आपको 4-5 ऑप्शंस दिखाए थे। इस केस में वो क्या करते हैं कि ये प्रैक्टिकल डाटा है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल डाटा, कि जब वो कन्वर्जन पर पास एक दफा, जैसे आपका फ्लो रेट होता है ना 100 किलोग्राम पर आवर, सो कंसीडर इट वन पास, कि 1 घंटे में 100 किलोग्राम किसी भी इक्विपमेंट में जाएगा। तो अगर प्लांट 24 घंटे चल रहा है तो इसका मतलब है 24 पास होंगे, और हर पास में 1 घंटा होगा, और हर घंटे में 100 किलोग्राम मटीरियल इसमें से गुजरेगा। ठीक है। सो हम ओके जब भी जब भी रिवर्सिबल रिएक्शंस आते हैं जिसमें चांसेस है कि अगर कंट्रोल अच्छा नहीं है तो प्रोडक्ट वापस रिएक्टर पे चला जाता है, तो हम एक पास में जो कन्वर्जन है उस पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं, और उसको हम ज़्यादा बढ़ाते नहीं है, ज़्यादा हाई सेट नहीं करते। तो सर अगर हम डेफिनेट साथ साथ इसमें रिमूव करते जाएं तब क्या उस वो केस में बिल्कुल क्या? ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है, मगर यहाँ पे मसला ये है कि सिर्फ रिएक्टर नहीं है, रिएक्टर के साथ और भी चीज़ें लगी हुई हैं, और उन चीज़ों में हमें प्रोडक्ट भी रिमूव करना है, यहाँ पे अनवांटेड और इनर्ट कंपाउंड्स भी रिमूव करने हैं, जो अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स रह गए हैं उनको वापस रिएक्टर में भी भेजना है। यहाँ पे मोर देन वन जॉब्स हैं जो हमें परफॉर्म करनी होती हैं। सो इस कॉम्प्लेक्सिटी को जहन में रखते हुए एक्सपेरिमेंटली लोग यहाँ तक पहुंचे हैं कि हमें एक पास में 20 से 30% तक यील्ड या कन्वर्जन को सेट करना चाहिए, और इस यील्ड इस कन्वर्जन पे जितनी भी अमोनिया बने उसे रिमूव कर लें, और जितना अनरिएक्टेड रिएक्टेंट बच जाए उस अमोनिया से सेपरेट होने के बाद उसको वापस रिएक्टर में भेजें, और फिर वो इसी डाटा को दोबारा से फॉलो करें। सो इस तरह करने से जो ओवरऑल कन्वर्जन आती है 24 घंटे बाद या 10 दिनों के बाद या 100 दिनों के बाद, वो ओवरऑल कन्वर्जन इतनी होती है कि आपका प्रोसेस की इकोनॉमिक्स फिजिबल होती है। क्योंकि याद रखिएगा, अगर प्रोसेस इकोनॉमिक्स फिजिबल नहीं ना है तो प्लांट सेठ जो है या ओनर जो है वो कभी भी प्लांट को चलाएगा नहीं, वो उसको बंद कर देगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को जहन में रख के ही ये एक्सपेरिमेंटली चीज़ें उन्होंने फाइंड आउट की होती है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। सर हमने डाईहाइड्रेट में प्रोसेस में पढ़ा था फ्लैट हीट एक्सचेंजर। दोबारा बोलिएगा। सर हमने डाईहाइड्रेट प्रोसेस में पढ़ा था फ्लैट हीट एक्सचेंजर। तो सिंपल हीट एक्सचेंजर और फ्लैट हीट एक्सचेंजर में कोई फर्क होता है? ये बेसिकली कॉन्फ़िगरेशंस का फर्क है, और कॉन्फ़िगरेशन के डिफरेंस से फर्क आता है जो हीट ट्रांसफर टारगेट है उसकी अचीवमेंट। अब आम अल्फाज में मैं यही भी बता सकता हूँ जो बताया है। एग्जैक्टली वो क्या फर्क आएगा वो तभी होगा, समझ आएगी आपको जब आप हीट एक्सचेंजर वाला या हीट ट्रांसफर वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना आइडिया रख लें कि कुछ हीट एक्सचेंजर्स ऐसे हैं कि वो डिज़ाइन में सिंपल है मगर उनकी एफिशिएंसी कम होती है, यानी कि वो कम हीट ट्रांसफर करवाते हैं। कुछ हीट एक्सचेंजर ऐसे हैं जो डिज़ाइन वाइज थोड़ा कॉम्प्लेक्स है मगर उनकी हीट ट्रांसफर की एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी होती है। कुछ हीट एक्सचेंजर्स हैं जो हायर कैपेसिटी हायर वॉल्यूम्स को हैंडल कर सकते हैं। कुछ हीट एक्सचेंजर्स हैं जो डिज़ाइन की एंगल से लो कैपेसिटी लो वॉल्यूम्स को हैंडल कर सकते हैं। सो इन बहुत से पॉइंट्स हैं जिनको देखते हुए ही आप किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर को हैंडल करते हैं।
इस पे कहीं पे आपको शेलन ट्यूब नजर आएगा, कहीं पे प्लेटेंट फ्रेम आएगा, कहीं पे डबल पाइप आएगा, कहीं पे स्पाइरल भी आ सकता है। तो बहुत सी इसकी टाइप्स है, डिपेंड करता है उसकी यूटिलिटी पे। ओके सर, थैंक यू। कोई और क्वेश्चन आप लोगों का? नो सर। अटेंडेंस मार्क हो गई है? यस सर।